वैभव। आप सुन रहे हैं मुझे? जी Yes. सर। अब आपको पता है कि अभी हमें क्या करना है। हमने अब एक मिनट, हमने ये जो है ना, ये इम्प्लीकेशन जो है इसकी रिवर्स इम्प्लीकेशन को एस्टैब्लिश करना है। दैट मीन्स मुझे आपको दिखाना है कि सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस इम्प्लाइज कंपैक्टनेस इन केस ऑफ मैट्रिक्स स्पेसेस। ठीक, इसी के लिए हम कुछ पहले मशीनरी डेवलप करेंगे, फिर उससे हम ये एस्टैब्लिश करेंगे कि दैट sequential compactness implies compactness, compactness implies sequential compactness। ये हमने इससे पहले जो हमारी क्लास हुई थी उसमें हमने ये देखा था। और हाँ, मैं आपको एक और यहाँ चीज़ बताना चाहता हूँ। वो जो हीन बोरल थ्योरम का जो प्रूफ है ना, उसमें मैं देख रहा था, उसको एक जगह आप थोड़ा सा ना उसको चेंज करिएगा। आप मैं बताऊंगा कहाँ। ये जो आप यहाँ लिख रहे हैं ना, ये हीन बोरल थ्योरम है। ये the above arguments also show that B belongs to G। आप इसकी जगह ये लिखिएगा, आप लिख रहे हैं दी अबो आर्ग्यूमेंट्स, आप दी अबो काटिएगा, आप लिखेंगे सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, बिकॉज इसकी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन आपने करनी है। एग्जैक्टली ऊपर वाली आर्ग्यूमेंट्स ही नहीं होंगी, इट विल बी सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स बेसिकली। ठीक है, तो ये करिएगा, दी अबो आर्ग्यूमेंट्स नहीं, आप लिखेंगे सिमिलर आर्ग्यूमेंट्स, मतलब ऐसी आर्ग्यूमेंट्स होंगी जिससे आप दिखा सकते हैं कि बी इज इन सी। ठीक है ना, तो ये करिएगा वहाँ। अब हम इस पर आते हैं ना, ये जो हमारा मेन टास्क है, टू शो दैट सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस इंप्लाइज कंपैक्टनेस। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि इसके लिए मुझे पहले कुछ मैथमेटिकल मशीनरी की जरूरत पड़ेगी, तो वो मैं पहले डेवलप करूंगा यहाँ। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाट आर लेबेग नंबर्स। लेबेग नंबर ऑफ एन ओपन कवरिंग। एक तो पहले मैं आपको ये बताऊंगा व्हाट इज दिस, और फिर हम देखेंगे द लेबेग कवरिंग लेमा। And then using this Lebesgue covering lemma, we'll establish that sequential compactness implies compactness. ठीक, ये अपने आप में भी एक ना एक इंटरेस्टिंग रिजल्ट है Lebesgue covering lemma का जो रिजल्ट होगा। बट यहाँ हम इसको एज लेमा इसलिए लिख रहे हैं बिकॉज एक्चुअली इट विल बी यूज्ड टू प्रूव दैट sequential compactness implies compactness. तो पहले ही हम ये Lebesgue नंबर्स को देख लेते हैं, Lebesgue नंबर्स। इसके लिए मैं थोड़ी सी मोटिवेशन आपको दूंगा पहले। You consider this. Suppose x is a b C D E F। ठीक है, और इसके बाद आप इस पर एक टोपोलॉजी लीजिए। सपोज टोपोलॉजी इज फाई एक्स ए कॉमा बी ए बी एंड सी। ठीक है, सी, और आप लीजिए फिर इसमें
आप लीजिए फिर ए डी ई एफ। ये नहीं रखे आप इसमें सिंगलटन ए बी सी एंड ए डी ई एफ। अब देखिए इज इट अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, फाई एक्स का इंटरसेक्शन होगा सिंगलटन ए, फिर इनका यूनियन लिया जाए इट विल बी ए बी सी डी ई एफ दैट इज एक्स। हाँ इट्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स, है या नहीं? इट्स अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। इसके बाद आप फैंसी एफ लीजिए। लेट्स सपोज फैंसी एफ इज ए बी सी एंड ए डी ई एफ। ठीक, और आप ए लीजिए एज कैपिटल ए। हाँ, कैपिटल ए आप लीजिए बी ई एफ। ये आप लीजिए कैपिटल ए। ठीक, अब देखिए आप दिस स्टार इज अ टोपोलॉजी ऑन एक्स। ठीक, अब ये फैंसी एफ जो है, अगर आप इसके मेंबर्स देखेंगे पहले, ये वहाँ टोपोलॉजी में भी आ रहे हैं, सो दैट मीन्स दे आर ओपन। और अगर आप इनका यूनियन लेंगे, फैंसी एफ मेंबर्स का यूनियन अगर आप लेंगे, क्या मिलेगा आपको? you'll get x. So therefore this fancy f is an open covering for x. This is an open covering for x. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, क्वेश्चन ये है, is there any covering member in fancy f which contains a? है कोई covering member which contains a? Contains a as a subset. Contains a as a subset. No, sir. नहीं है कोई. There are only two covering members. ये और ये. Let's suppose this is, let's call this O1, let's call this O2. O1 is not a superset of A. मतलब A is not contained in O1. Why? Because there is a point. There are actually 2 points in A, E, and F which are not in O1. So that means A is not a subset of O1. What about O2? Is A a subset of O2? No, because there is a point B in A which is not in O2. So that means what? There is no covering member in fancy F which contains A. ठीक, तो ये तो आपने देखा, इसका आंसर है नो, ऐसा कोई कवरिंग मेंबर नहीं है. अब एक और क्वेश्चन, what corrections do you suggest for this A so that it becomes a subset of some covering member?
क्या कोई करेक्शन आप सजेस्ट करना चाहेंगे फॉर दिस ए so that it becomes a member of some covering it becomes a subset of some covering member? बी को रिमूव करेंगे. Exactly. अगर आप भी रिमूव करेंगे then it becomes a subset of this. तो रिमूव करने का मतलब है कि आपको इसको छोटा बनाना होगा, है ना. बी रिमूव करने से इस पे क्या असर पड़ता है, इस ए पर, ये छोटा बन जाता है. तो यहाँ आप देख रहे हैं कि एक्चुअली मैं आपको एक इनडायरेक्टली एक चीज बता रहा हूँ कि by making a set small, in this case at least, you can ensure that this A becomes a subset of some covering member. है या नहीं? At least in this case, we can make this A. By making this A smaller, we can ensure that this A becomes a subset of a covering member. तो ये समझ आता है हमें कि छोटा बनाने से आप सेट को कवरिंग मेंबर किसी कवरिंग मेंबर का सबसेट बना सकते हैं. अब एक क्वेश्चन है यहाँ पर, हाउ स्मॉल अ सेट हैज टू बी in order to be contained in some covering member as a subset. है ना. छोटा बनाने से तो ठीक है, ये समझ आता है कि छोटा बनाने से इसको मेंबर बना सबसेट बनाया जा सकता है किसी कवरिंग मेंबर का. अब लेकिन एक क्वेश्चन है, हाउ स्मॉल अ सेट हैज टू बी in order to be contained as a subset in some covering member. ठीक. The answer to this question is given by the Lebesgue number of the covering. Lebesgue number असल में यही चीज आपको बताती है. हाउ, ये जो Lebesgue number होता है ना, Lebesgue number of an open covering, it tells you how small a subset has to be in order to be contained in some covering member of that open cover. ये आप लिखिए, अब जब मैं ये लिखूंगा तो आपको ये समझ आएगा कि बेसिकली क्या हो रहा है. तो आप लिखिए आप एज अ डेफिनेशन, Lebesgue number of an open cover. But unfortunately, this concept of Lebesgue numbers, it makes sense only for metric spaces. Because जब आप कहते हैं हाउ स्मॉल, तो मीन्स साइज डिटरमाइन करने का कोई पैमाना होना चाहिए, और वो मेट्रिक स्पेसेस में होता है, डायमीटर. टोपोलॉजिकल स्पेसेस में एज सच हमारे पास अभी ऐसी कोई चीज अवेलेबल नहीं है. यहाँ एक रिस्ट्रिक्शन है कि we have to confine ourselves to metric spaces. तो मैं वही यहाँ कर रहा हूँ. Let xt be a metric space and fancy f be an open covering of x in xt, full stop, a positive number lambda, little lambda. It has to be positive. लिखिएगा ऐसे, पॉजिटिव नंबर लैम्डा इन आर, मतलब ये इन्फिनिट नहीं हो सकता. इन आर मीन्स इट हैज टू बी a finite positive number. It has to be finite. Positive number lambda in R is said to be uh, said to be a Lebesgue number for the open cover fancy F, if and only if. इसके लिए requirement ये है, if and only if. For each A
contained in X with diameter of A, delta A means diameter A, less than lambda, there exists some O in fancy F such that A is contained in O. ये है definition Lebesgue number. That means each subset of X whose diameter is less than lambda is contained in some covering member. There exists some O in fancy F means is contained in some covering member. There exists some O in fancy F with A contained in this. तो यही है ना फिर तो ये होता है Lebesgue number. So Lebesgue numbers indeed actually tell us how small a set has to be in order to be contained in some covering member. ठीक है ये है Lebesgue number of an open curve. अब एक चीज तो आप यहाँ से इजीली देख सकते हैं. So as a remark. If xd ऐसे लिखिए let xd be a metric space fancy f be an open covering for x and lambda be a Lebesgue number for this open cover fancy f full stop. If lambda 1 in R be such that 0 is less than lambda 1, that means lambda 1 is positive and lambda 1 is less than lambda, then this lambda 1 is also a Lebesgue number. Is also a Lebesgue number for fancy f. इससे आप agree करते हैं? देखिए अब मैं यहाँ मान रहा है कि that lambda जो है it's a Lebesgue number for fancy f. That means ये होगा for each a with diameter less than lambda there will be a covering member which contains that a. ठीक है तो ये होगा lambda के लिए because हम मान रहे हैं ना नीचे lambda is a Lebesgue number for fancy f. Now what is lambda 1? Lambda 1 is positive and it is less than lambda. Lebesgue number होने के लिए पहली रिक्वायरमेंट है कि नंबर इट हैज टू बी अ पॉजिटिव नंबर. lambda 1 इज पॉजिटिव. मैं आपको दिखाऊंगा lambda 1 में वो दूसरी रिक्वायरमेंट भी फुलफिल हो रही है. उसके लिए आपने क्या करना है सिंपली यू टेक अ सबसेट A of x with let A be a subset of x with diameter of A less than lambda 1. Now diameter of A is less than lambda 1. Lambda 1 जो है it is less than lambda. So that means diameter of A जो है it will be less than lambda also because lambda 1 is less than lambda. Now diameter A less than lambda and lambda is Lebesgue number. It means what? It means there exists this O in fancy F. And therefore we can find O in fancy F such that A is contained in O. ठीक? Full stop.
So let's summarize this. मैं आपको दिखा रहा हूँ. Whenever A is a subset of X with diameter A less than lambda 1, there exists this, means we can find O in fancy F such that A is contained at an O. So that means whenever diameter of A is less than lambda 1, it's a member of, it's a subset of some covering member. It's a subset of O and O is a covering member. So means lambda 1 also acts as a Lebesgue number. So any number less than, any positive number less than a Lebesgue number is also a Lebesgue number. So that means there is no uniqueness to these Lebesgue numbers. Lebesgue numbers, they are not unique. Lebesgue number of an open cover is not unique. इसका reason ही है because if lambda is an if lambda is a Lebesgue number for fancy F, then any positive number less than lambda also acts as a Lebesgue number for fancy F. इसीलिए मैं यहाँ यूज कर रहा हूँ a Lebesgue number. अगर आपने नोटिस किया होगा, is said to be a Lebesgue number because there is no uniqueness. ठीक है. एक और चीज इसके लिए आप वापस इस एग्जांपल पर आइए. जो इनिशियली हमने यहाँ देखा था ना, ये जो A हमने लिया था B E F, इस A के करस्पॉन्डिंग देयर वाज नो ओपन कवर, देयर वाज नो कवरिंग मेंबर in this open cover which contains this A, है या नहीं? If you take this A, और आपने देखा कि then there is no covering member in fancy F which contains A, right? अब ऐसे A इसको हम कहेंगे bad sets for the cover. हमारा आज अभी इस लेक्चर में हमारा जो ये होगा ना, इस लेक्चर में ऐसे सेट्स को हम कहेंगे बैड सेट्स. अब मेरा क्वेश्चन है आपसे, कैन फाई एम्प्टी सेट, कैन फाई बी अ बैड सेट? ये क्वेश्चन है मेरा आपसे, बताइए. आपने समझा पहले हम बैड सेट किसे कहेंगे? नो सर, मतलब ये नहीं होगा हाँ, बैड सेट. ये बैड सेट नहीं. बैड सेट से हमारी मुराद है अ सेट विच इज नॉट कंटेन्ड इन एनी ऑफ द कवरिंग मेंबर्स. सो फाई जो है ना, चाहे कोई भी कवरिंग आप लीजिए, फाई बैड सेट नहीं हो सकता बिकॉज फाई इज ऑलवेज कंटेन्ड इन एवरी सेट. फाई इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, सो ये बैड सेट नहीं हो सकता. सो इट इज नॉट, द आंसर इज नो. एक और क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्वेश्चन 1. अब क्वेश्चन 2, कैन सिंगलटन सेट्स be bad sets? क्या लगता है आपको? The answer to this is again no. देखिए कैसे, इसकी जस्टिफिकेशन मैं आपको दे रहा हूँ. Let xt be a metric space fancy f equal O sub alpha, where alpha varies over indexing set capital lambda, be an open cover for x in xt and A equal singleton x, where x is a point in x, be a singleton set. ठीक है ना? Now आप कह रहे हैं कि little x is a point of capital X. Little x is a point of capital X, and this is a covering for x. So x can be written as union O sub alpha, alpha in indexing set capital lambda. So therefore you are saying that x, little x, it belongs to the union. If it belongs to the union, so क्या होगा फिर? We can find a set in the union which contains this x as a member. And these sets are indexed by alpha, so we can find an index basically. So we can find alpha naught in capital lambda such that x belongs to
O sub alpha naught. ठीक? If X belongs to this as a member, so singleton X will be contained in this as a subset. Therefore, this is contained in O sub alpha naught. And what is this? This is A. So A, which is singleton X, is contained in this. And what is this? It's a covering member. So A is contained in a covering member. So it cannot be a bad set. What is A? It's a singleton set. So singleton sets cannot be bad sets. Here by bad set we mean a set which is not contained. चलिए ये पहले आप लिखिए. Although it's informal notation, but इस discussion को meaningful बनाने के लिए आपने ये किसी जगह लिखना होगा कि what we mean by bad sets. Bad sets with respect to open cover. Fancy F are those subsets of X which are not contained as subsets in not contained as subsets in any of fancier members. In any of the fancier members. ये होंगे हमारे लिए bad sets. There will be those sets, those subsets of X which are not contained as subsets in any of the fancier. सही हो रहा है? Which are not contained as subsets. That is a subset. B is said to be a bad set with respect to open cover, open covering fancy F if and only if B is not contained in O, and this is true for all O's in fancy F. ये होंगे हमारे ये बैड सेट्स. और यहाँ आप देख रहे हैं कि empty set cannot be a bad set, singleton sets cannot be a bad set. That means जो bad sets है उनमें क्या होना चाहिए फिर? Empty set bad set नहीं हो सकता, singleton sets भी bad sets नहीं हो सकते. तो ये bad sets में फिर क्या होना चाहिए? कम से कम कितने एलिमेंट्स होने चाहिए bad set में? 2 एलिमेंट्स होने चाहिए कम से कम. ठीक है, तो ये आप लिखेंगे नीचे यहीं पर लिखिएगा एज अ रिमार्क. A bad set contains at least 2 elements. A bad set with respect to fancy F contains at least
टू एलिमेंट्स। ये काफी इंपॉर्टेंट होने जा रहा है as far as the proof of the Lebesgue covering lemma is concerned. A bad set contains at least two elements. चलिए let's go to this ना, इसके बाद हम डायरेक्टली अब जाएंगे ये जो Lebesgue covering lemma है इसी को हम देखेंगे। स्टेटमेंट इसका पहले रिकॉर्ड करिए। Lebesgue covering lemma। स्टेटमेंट इसका ये है, in a sequentially compact metric space sequentially compact metric space every open cover has a Lebesgue number। जो भी अभी तक मैंने आपको कहा ना Lebesgue numbers के बारे में, there is no reason to expect that these Lebesgue numbers will always exist, and there is no such reason to expect the existence of these। था कोई reason definition में? Is there any reason to expect that these Lebesgue numbers will always exist? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, and this is an existence theorem। At least in sequentially compact metric spaces, you will be able to find Lebesgue numbers. That means you will know how small a set has to be in order to be contained in some covering number। आपको ये पहले से ही पता होगा, ठीक है? Every open cover in a sequentially compact metric space has a Lebesgue number। Proof। स्टेटमेंट में हमने मेट्रिक स्पेस इंट्रोड्यूस नहीं करी है, तो हमें ये पहले प्रूफ में इंट्रोड्यूस करनी होगी। वही कर रहा हूँ, लेट x be a sequentially compact metric space and fancy f equal O sub alpha, where alpha varies over capital lambda, be an open covering, be an open cover for x in the metric space xt। ठीक, मैं एक सीक्वेंशियली कंपैक्ट मैट्रिक्स स्पेस दे रहा हूँ और इसका जो अंडरलाइंग सेट है उसकी एक ओपन कवर मैं ले रहा हूँ, ठीक है? उसकी एक ओपन कवरिंग ले रहा हूँ। इसके बाद आप ये देखिए, लेट जी बी इक्वल, इसे ध्यान से देखेंगे, या जी नहीं, हम कुछ और लेंगे यहाँ सिंबल। आप लीजिएगा, denote this by script b, ये आप लीजिए, let script b equal, ये ध्यान से देखना आपने, those is in p of x, that means those subsets of x, p of x members are subsets of x, such that the qualifier is this, such that a, it should not be contained in any O sub alpha। अब ऐसे मुझे बता सकता है कोई what is this script b then?
collection of bad sets. It is the collection of bad sets. ठीक है, तो एक्चुअली वी आर टारगेटिंग द बैड सेट्स. तब जाके ना आपको ये समझ आएगा ये प्रूफ का जो वो मैकेनिज्म है, ये प्रूफ कैसे काम करता है. जब आपने हर एक चीज पर नजर रखनी है. दिस स्क्रिप्ट बी इज अ कलेक्शन ऑफ बैड सेट्स. इसमें बैड सेट्स रहते हैं. ठीक है, अब ये मुझे बताइए, इफ दिस स्क्रिप्ट बी इज एम्प्टी, देन क्या होगा फिर. ये सिचुएशन को आप इमेजिन करिए. Script B is empty. Script B is collection of bad sets. So that means what? That means there are no bad sets. अगर कोई भी बैड सेट नहीं है तो फिर क्या होगा. अब अपने आपसे पूछिए, डू यू इवन रिक्वायर अ Lebesgue नंबर इन दिस केस. अगर आपने किसी पार्क में जाना है, ठीक, अगर वहां टिकट नहीं है तो आप खामखा में टिकट खरीदेंगे पहले. यहाँ जो है ना, there are no bad sets, so you don't require a Lebesgue number. So actually you can say that every number will act as a Lebesgue number because there is essentially no need of a Lebesgue number in this case because there are no bad sets. Lebesgue number वहाँ काम आएगा where there are bad sets. So वहाँ आपको बताएगा कि how small a set has to be in order to be contained in some covering member. That means in order to be contained in some covering member, when I say it means that how small it has to be in order to be a good set. So basically there is no need of Lebesgue numbers in this case. So you can say that every number will act as a Lebesgue number. If this is empty, then every, हाँ, ये Lebesgue number जो वो पॉजिटिव होता है तो यहाँ आप लिखेंगे then every positive real number acts क्योंकि हम इसको then फॉर्म में लिख रहे हैं तो आप इसको ऐसे लिखें then every positive real number can act as a Lebesgue number for fancy f. है या नहीं. अब हम क्या assume करेंगे फिर. So एक्चुअली इस केस में हो गया, आपको दिखाना है एग्जिस्टेंस ऑफ a Lebesgue नंबर. इस केस में कोई भी नंबर एक्ट कर सकता है एज Lebesgue नंबर. ठीक. So therefore it is the trivial case for this theorem, for this proof, या for this lemma. तो हम क्या assume करेंगे अब. So we assume this script B is not empty. So we'll assume that this is not empty. ठीक है. अब इसके बाद let capital G be equal ये ध्यान से देखेंगे अब delta of B. अब हम क्या करेंगे, will measure the diameter of these bad sets. इसके लिए हम ये कर रहे हैं, G will be delta B, diameter of B, such that B varies over script B. आ रहा है समझ कुछ. And measuring the diameter of these bad sets. ठीक है. इसके बाद या इसी के साथ लिखिएगा कॉमा देन व्हाट अबाउट दिस जी. जी के बारे में क्या जानते हैं आप.
अभी आपने देखा जो बैड सेट है उसमें क्या होता है, उसमें कम से कम कितने पॉइंट्स होते हैं? 2। 2 पॉइंट्स। तो डायमीटर के बारे में क्या ख्याल है आपका? क्या बैड सेट का डायमीटर 0 हो सकता है? No, sir. नहीं हो सकता sir. 0. So in fact it will be positive. So therefore this G is what then? Then capital G is a non-empty. बताइए non-empty क्यों है ये? Because script B is non-empty. There are bad sets, so there will be diameters, so therefore it's non-empty. Set is a non-empty set of what? Of positive can I write this is a non-empty set of positive real मैं पूछ रहा हूँ can I write this positive real numbers? Non-empty subset of positive. नहीं वो आप गलत डायरेक्शन में जाए, इसमें क्या फर्क है? सबसेट है सेट, एक ही बात है। मैं थोड़ी कह रहा हूँ कि इसमें सारे पॉजिटिव्स हैं, मैं कुछ और यहाँ बेसिकली आपसे पूछ रहा हूँ। क्या ये लिखना सही होगा? नहीं, इन्फिनिटी एग्जैक्टली इसमें इन्फिनिटी भी आ सकती है, डायमीटर्स कैन बी इन्फिनिट ऑल्सो। सो ये रियल नंबर्स लिखना यहाँ प्रॉब्लम है, तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर? पॉजिटिव आ रहा है समझ? क्या लिखना चाहिए? पॉजिटिव एक्सटेंशन। नहीं, क्या एक्सटेंशन? क्या एक्सटेंशन ऑफ रियल नंबर। एक्सटेंडेड रियल पॉजिटिव नंबर। एक्सटेंडेड। पॉसिबली इसमें इन्फिनिटी भी आ सकता है जी में एक नंबर। ठीक है, इसके बाद लेट बीटा, अब बीटा की जगह कुछ और लिखेंगे, बीटा लिखने में प्रॉब्लम करेगा। लेट हम अल्फा यूज इंडेक्सिंग के लिए कर रहे हैं, तो क्या लेंगे हम? आप लीजिए लेट डब्ल्यू बी इक्वल दी infimum ऑफ जी। ये infimum ऑफ जी किसे टारगेट करेगा सर? आप सोचिए इस पर। जी में क्या कौन सी चीजें हैं? जी में डायमीटर्स है, किन के डायमीटर्स है? जो बैड सेट्स है उनके डायमीटर्स है। तो infimum जी किस चीज को टारगेट करेगा? आप मेरी बात सुन रहे हो? किसे टारगेट कर रहा हूं मैं यहाँ जब मैं ये ले रहा हूँ ना infimum जी? लेबेग नंबर। आप इतनी जल्दी लेबेग नंबर पर नहीं जा सकते, आपको कहना चाहिए वी आर इन अ वे वी आर टारगेटिंग द डायमीटर ऑफ द स्मॉलेस्ट बैड सेट, है ना? अब अगर किसी सेट का डायमीटर इस इन्फिमम से छोटा होगा, क्या वो फिर बैड सेट हो सकता है? नो सर। वो फिर बैड सेट, दैट मीन्स एनी नंबर लेस देन दिस w विल एक्ट एज अ लेबेग नंबर। मगर मसला यहाँ पर पता है क्या है? मसला ये है, व्हाट इफ w इज 0? अगर w 0 होगा, क्या फिर आप पिक कर सकते हैं अ नंबर लेस देन w?
आप तो कर सकते हैं, लेकिन वो लिबेग नंबर नहीं हो सकता, बिकॉज लिबेग नंबर की पहली शर्त है कि इट हैज टू बी पॉजिटिव। तो ये हमारे लिए प्रॉब्लम है, W इक्वल टू 0 इज अ प्रॉब्लम, और मैं आपको दिखाऊंगा दिस इज नॉट पॉसिबल। W जो है ना, इट कैन नॉट बी 0, वही हम यहाँ करेंगे। So we claim that this W is what is not 0, और इसे आप रखेंगे star. W is not 0. अब फॉर इफ अगर ऐसा नहीं है, अगर ये 0 होगा, बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा उस केस में विल गेट अ कंट्रडिक्शन। फॉर इफ W is equal to 0, then for each n in the set of natural numbers, for each n in the set of natural numbers, अब ये देखें W which is 0 है या नहीं, W and 0 will be less than 1 by n. Agree करते हैं आप इसे? हाँ, this is straightforward. 1 by n is positive, तो फिर ये होगा W will be less than 1 by n. But what is W? W को आप जानते हैं as infimum. Infimum means the greatest lower bound, GLB. So this is GLB, greatest lower bound, and this quantity is bigger than GLB. It is bigger than the greatest lower bound. So means what? Means ये quantity अब जो लोअर बाउंड्स में सबसे बड़ा है ना, ये उससे भी बड़ा है, तो मीन्स ये लोअर बाउंड नहीं हो सकता। किसका लोअर बाउंड नहीं हो सकता? जिसका W GLB है। W is GLB of capital G, so means 1 by n cannot be a lower bound for capital G, so means capital G में एक मेंबर होगा which is what? समझ रहे हैं ना आप? 1 by n is bigger than, strictly bigger than GLB of G, means 1 by n cannot be a lower bound of G. It is not a lower bound of G, means there exists an element. There will be an element, say G sub n in G, such that diameter of मैं यहाँ ले रहा हूँ G sub n as element of G, such that G sub n will be strictly less than 1 by n, because 1 by n is not a lower bound. But G members जो है ना, they are of the form diameter of B, where B is a bad set. So means ये जो चूंकि आप कह रहे हैं G sub n is a member of G, so that means G sub n must be actually diameter of B sub n, where B sub n is a bad set. So say, actually it means that we can find a bad set. मैं यही लिखूंगा यहाँ. For each n, this is and for each n in the set of natural numbers, 0 W which is 0 is less than 1 by n, and therefore we can find a bad set B sub n in script B such that the diameter of B sub n will be less than 1 by n. ठीक? G is less than 1 by n. G will be diameter of B sub n for sub B sub n in script B. So that means this.
अब इसके बाद आपने क्या करना है, पिक। यहाँ बेसिकली एक्शन ऑफ चॉइस यूज हो रही है, आप माने या ना माने, वी आर यूजिंग एक्शन ऑफ चॉइस, पिक। और ये भी आपने करना है फॉर ईच एन। अब यहाँ आपने देखा ना कि फॉर ईच एन वी कैन फाइंड अ बी एन। बी एन्स आर बैड सेट्स में कम से कम 2 एलिमेंट्स हो सकते हैं, सो दैट मीन्स दे आर नॉन एम्पटी, सो यू कैन पिक एलिमेंट्स फ्रॉम बैड सेट्स। पिक सॉरी, वो फॉर ईच एन यहाँ भी लिखना जरूरी है, फॉर ईच एन इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स पिक x sub n in b sub n। ये आप देखिए पहले क्या हो रहा है। यहाँ मैंने आपसे कहा कि फॉर ईच n देयर इज b sub n, सो फॉर n इक्वल टू 1 आपको मिलेगा b sub 1, फॉर n इक्वल टू 2 you'll have b sub 2, फॉर n इक्वल टू 3 you'll have b sub 3 एंड देन सो ऑन। ठीक, मैं आपसे कह रहा हूँ आप क्या करिए, यहाँ से एक एलिमेंट पिक करिए, लेट्स कॉल दैट एलिमेंट x1, यहाँ से एक एलिमेंट पिक करिए और कॉल दैट एलिमेंट x2, यहाँ से एक एलिमेंट पिक करिए and call that element x3, and this ये आप कर सकते हैं because these are bad sets contain at least 2 elements, so this is permissible। वही मैं यहाँ आपसे कह रहा हूँ, for each n in the set of natural numbers pick x n and b sub n। ऐसा करने से क्या मिलेगा हमें, in this way क्या मिलेगा हमें ऐसा करने से, we get a sequence xn, n running from 1 to infinity in x full stop। अब x के बारे में क्या जानते हैं आप, हमारी assumption जो है x के बारे में वो ये है कि that it is sequentially compact। अब हम sequential compactness का इस्तेमाल करेंगे। sequentially compact means what? There will be a subsequence. Exactly, since xd is sequentially compact, मैं यही लिखने जा रहा हूँ, sequentially compact we can find there will be a convergent subsequence। convergent subsequence होने का मतलब है there will be a limit, because that convergent subsequence will converge to some limit। In fact, the limit will be unique, so we can find x in capital X such that this x is the what? It will be the limit of some subsequence in xn of some subsequence of xn and और ये कहाँ होगा, in the setting xt। ठीक है, तो ये होगा because this is a sequence in x and xd is a sequentially compact space। ठीक है, stop। Consequently we can find, ये आप ध्यान से देखेंगे आप, we can find एक और चीज पहले आप ध्यान रखिए, तब जाके फिर ये हम देखेंगे। ये आर्गुमेंट अभी सही नहीं होगा इसे इन्वोक करना, पहले हम ये देखेंगे। नाउ सो नेक्स्ट पैरा में लिखेंगे, नाउ x belongs to x and x is what? X is equal to the union O sub alpha, where alpha varies over capital lambda, है या नहीं? Because O sub alpha की जो collection है, it's a cover, it's an open cover for x, so x is contained rather equal to
the union of these O sub alphas. Now little x is a member of x is equal to union. तो इससे क्या मिलेगा आपको? X belongs to this, which is this, implies X belongs to the union. X belongs to the union means there will be some set in the union which contains this X as a member. The sets in the union are indexed by alpha, so that means there will be an index actually. Implies we can find alpha naught in the indexing set capital lambda such that X belongs to O sub alpha naught. Okay? And therefore, now these are open sets. X is a member of this open set means it must be an interior point then. So that means there must be a radius. And therefore, we can find बहुत बार आ रहा है तो यहाँ पे लिखेंगे and therefore there exists are positive such that the open sphere with center x and radius r, this will be contained in O sub alpha naught. ठीक है तो ये होगा. अब इसके बाद आप क्या करिए, पिक m in the set of natural numbers such that distance between xm and x, this should be less than r by 2. ठीक, and 1 by m, it should be also less than r by 2. आप मुझे बताइए क्या आप ये कर सकते हैं? अगर कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं वो आप बताइए. इसका रीजन ये है, देखिए ये जो x है आपको पता है कि दैट x is what? X is the limit of some subsequence of xn. So that means distance between xn and x, this will be less than r by 2, and this will be true for infinitely many values of n. This will be true for infinitely many values of n. ठीक, so this is true for infinitely many values of n.
मैं आपसे कह रहा हूँ इन्हीं इन्फिनिटली मेनी वैल्यूज ऑफ n में से आपने एक ऐसा वैल्यू लेना है n का जो इतना बड़ा होना चाहिए कि दैट इसका जो रेसिप्रोकल है इट शुड बी लेस देन r by 2. It is possible because again you have an infinite collection at your disposal. ये आप इससे आप अग्री करते हैं? This is true for infinitely many values of n. It's Yes. because of this, because x is the limit of some subsequence in xn. That means certain terms of this sequence xn are going closer and closer to x. In fact, there is a whole subsequence which converges to this x. So this is true for infinitely many values of n. और अगर ये true है for infinitely many values of n, तो उन values वो जो infinitely many values है उनमें हम एक ऐसा value select कर सकते हैं जो इतना बड़ा होगा कि that इसका reciprocal is less than 1. ठीक है? This is permissible. Then अगर आप इसे देखेंगे b sub m, मैं आपसे कहता हूँ this is contained at n o sub alpha naught. We know that for each n there is a b sub n, है ना? वो हमने ऊपर देखा है. For each n we can find b sub n. तो ये जो नीचे हमारा m है इसके करस्पॉन्डिंग क्या होगा? इसके करस्पॉन्डिंग होगा b sub m. और मैं आपसे कह रहा हूँ this b sub m is contained at n o sub alpha naught. This o sub alpha naught. अब इसको कैसे देखेंगे आप? देखिए कैसे. Let's take a zeta in b sub n. ठीक. अब क्वेश्चन है what is the distance between zeta and x? In the first place, this is less than or equal to distance between zeta and xm, ठीक, plus distance between xm and x, है या नहीं? By triangle inequality. ठीक. अब यहाँ देखिए xm and x इनके दरमियान जो distance है वो जिस तरह से आप ये m ले रहे हैं, this distance is what? It is less than r by 2. ठीक. So this is less than r by 2. So this is less than r by 2. अब क्वेश्चन है what about this? zeta कहाँ से आ रहा है? It comes from b sub m. xm कहाँ से आ रहा है? उसके लिए आप देखेंगे कि xns कहाँ से आ रहा है. xns कहाँ आपने इंट्रोड्यूस किए थे इस प्रूफ में? Yes. आप देखिए xn comes from bn. तो xm will be coming from bm. तो means xm is a point of bm. So that means ये zeta और ये xm ये दोनों कहाँ से आ रहे हैं? ये दोनों bm से आ रहे हैं. तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है वो ज्यादा से ज्यादा bm का डायमीटर हो सकता है, because diameter of bm is the largest possible distance which you can compute in bm. It is actually the supremum of all those distances which you can compute in bm. So therefore this will be what? This will be less than or equal to, यहाँ strict है, यहाँ less than or equal, so overall it will be strictly less than diameter of bm plus r by 2. अब ये diameter of bm के बारे में क्या जानते हैं आप? उसके लिए आप ऊपर देखिए, हमने ऊपर देखा है प्रूफ में ही हमारे लिखा होगा ये हमें पता है कि that for each n diameter of b sub n is what? It is less than 1 by n. So diameter b sub m क्या होगा? It will be less than 1 by m. So this is further less than 1 by m plus r by 2. ठीक है? Now 1 by m को देखिए आप, उसके लिए भी हमारे पास एस्टिमेट है यहाँ पर, ये रहा 1 by m is less than r by 2. हमने इसी तरह से इस m को सिलेक्ट किया. So this will be what then? This will be less than r by 2 plus r by 2 which is r. तो क्या देख रहे हैं आप? आप देख रहे हैं distance between zeta and x is less than r. So that means zeta must be where? It must be in the open sphere
विच ओपन स्फीयर था मुझे बताइए। centered at X with विद radius. रेडियस r सेंटर, और ये जो ओपन स्फीयर है ये कहाँ पर है? ओपन स्फीयर सेंटर x रेडियस r, it is contained in O sub alpha. This is contained in O sub alpha naught. So that means zeta belongs to O sub. But zeta कहाँ से आपने लिया था? BMs. आर्बिट्रेली लिया था, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं थी इस पर। तो मीन्स एसेंशियली आप दिखा रहे हैं कि BM का हर एक पॉइंट किस में होगा? O sub alpha naught में। So that means what? ठीक है, तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। Then BM is contained in O sub alpha naught. ठीक, कॉमा, अब मैं आपसे कह रहा हूँ which is a contradiction, which contradicts, किसको ये contradict करता है मुझे बताइए? Contradicts the fact that B sub m, ये B sub n's कहाँ से आ रहे हैं? They are coming from script B and this is true for each n. So B sub m भी script B से ही आएगा, बट script B में जो members है उनके लिए क्या कंडीशन है या उनके लिए क्वालिफायर क्या है? script B members में ये होता है they are not subsets, they are bad sets. तो ये होगी ना फिर कंट्रडिक्शन। आप कह रहे हैं कि BM is contained in O sub alpha naught, O sub alpha naught is a covering member, तो आप कह रहे हैं B sub m is a good set, but it's a contradiction because it's a bad set. So it contradicts the fact that B sub m belongs to script B. Stop. ये contradiction क्यों आई? अब इसका रीजन अगर आप देखने की कोशिश करेंगे, वो पता है रीजन क्या है इसका? रीजन W ये is है, for if W is equal to 0 then we get a contradiction. Hence जो W है it is not 0, so ये क्या होगा? अब greater than. तो ये या तो पॉजिटिव क्वांटिटी होगी कोई, या इन्फिनिटी होगा। इन्फिनिटी भी हो सकता है W। अगर सपोज G का हर एक मेंबर इन्फिनिटी है, मान लीजिए हर एक डायमीटर यहाँ इन्फिनिटी है, सो व्हाट विल बी G? इट विल बी इन्फिनिटी इन्फिनिटी इन्फिनिटी। और अगर रिपीटेशन खत्म करेंगे इट विल बी सिंगल इन्फिनिटी, एंड व्हाट विल बी द इन्फिनिमम? इट विल बी इन्फिनिटी। सो W इज नाउ 0, सॉरी W इज नॉट 0, ये खत्म हो गया, ये पॉसिबल नहीं है, हमारा क्लेम एस्टैब्लिश हो गया। Because if W is 0 we get a contradiction. तो पहले इसको लिखिए आप। Hence W is not 0. इसको मैं ऐसे लिखूंगा, hence for claim in star is established and therefore जो W है it belongs to where now? ये 0 नहीं है, तो या तो ये पॉजिटिव होगा या इन्फिनिटी हो सकता। तो W belongs to, इसको आप ऐसे लिखेंगे 0, 0 नहीं हो सकता, 0 पर ओपन, इन्फिनिटी हो सकता है, तो आप यहाँ से ऐसे लिखेंगे 0 इन्फिनिटी क्लोज्ड एट इन्फिनिटी। ठीक, ये है। अब इसके बाद पिक, अब आप क्या करिए, यू पिक लैम्डा, और ये लैम्डा कहाँ से लेंगे आप? पिक लैम्डा इन 0 to W, open at W,
या ऐसे आप इसको लिख सकते हैं, पिक लैम्डा इन आर, इसको ये बेहतर होगा, पिक लैम्डा इन आर in such a way that 0 is less than lambda, that means lambda is positive and is less than w. Then अब देखिए, अब अपने आप से आप पूछिए, what is w? w is the infimum of the diameters of the bad sets. lambda जो है, it is less than w. ठीक, तो अगर किसी सेट का डायमीटर लैम्डा से छोटा होगा, क्या वो बैड सेट हो सकता है? वो फिर बैड सेट नहीं होगा, it has to be a good set, so that means there will be a covering number, so that means lambda acts as a Lebesgue number. Then lambda acts as a Lebesgue number for fancy f, and this proves the lemma, Lebesgue covering lemma. बस यही आपने करना था। बेसिकली मैं आपको दिखा रहा हूँ दोनों केसेस में, चाहे स्क्रिप्ट भी एम्प्टी हो या नॉन एम्प्टी हो, दोनों केसेस में फैंसी एफ का Lebesgue नंबर होगा। आप देख रहे हैं अब कैसे होगा ये Lebesgue नंबर। Lebesgue नंबर की एक क्वालिफिकेशन है या एलिजिबिलिटी, इट हैज टू बी पॉजिटिव, लैम्डा इज पॉजिटिव। चलिए वो तो ठीक है। अब अगर आप कोई ए लेते हैं nx विद डायमीटर ऑफ ए लेस देन लैम्डा, ठीक, लैम्डा क्या है? लैम्डा इज लेस देन w. व्हाट इज w? w इज द infimum ऑफ g, infimum of the diameters of bad sets. Now चूंकि diameter of A जो है, it is strictly less than the infimum of the diameter of, या अब ऐसे इसको देखिए, चूंकि diameter of A जो है, it is strictly less than infimum of G, so it means diameter of A जो है, ये G में नहीं हो सकता। हो सकता है G में ये? No, sir. नहीं हो सकता। तो ये G में नहीं होने का मतलब है कि A is not in script B. A is not in script B means it's a good set, means there exists some alpha in lambda such that A is contained in O sub alpha. Means this lambda acts as a Lebesgue number, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। So ये हो गया Lebesgue covering lemma। अब आज के बाद आप ये याद रखेंगे कि that in sequentially compact matrix spaces every cover has a Lebesgue number। ठीक, अब इसके बाद आप एक और थ्योरम रिकॉर्ड करिए। स्टेटमेंट इसका ये है, एवरी sequentially compact metric space is totally bounded। ठीक है, लेट्स प्रूव दिस फर्स्ट। प्रूफ आसान है। लेट xd be a sequentially compact metric space हमें दिखाना है इट इज टोटली बाउंडेड। हम इसको दिखाएंगे यूजिंग द मेथड ऑफ कंट्रडिक्शन।
if possible, suppose xd is not totally bounded. ठीक, इसके बाद आप क्या करिए, पिक x1 in capital X full stop. This can be done because जो xd है it's a metric space. ठीक, तो x will be non-empty. तो अगर x non-empty है तो क्या होगा फिर, you can pick an element in x. तो वही मैं आपसे याद कर रहा हूँ. This is permissible because x is non-empty. This can be done because x is non-empty. अब चूंकि by our assumption जो हम यहाँ assume कर रहे हैं कि xd is not totally bounded. Totally bounded होने का क्या मतलब होता है, और अपनी नोटबुक्स में देखें. Totally bounded means इसका ये for each epsilon greater there will totally be bounded an means epsilon net. for each epsilon positive xd has an Epsilon has an epsilon net. epsilon net. In fact, they're equivalent. Totally bounded means this means totally bounded because this is the definition of totally boundedness. अब यहाँ आप assume क्या कर रहे हो, it is not totally bounded. तो not totally bounded में क्या होने का क्या मतलब होगा, There will be an epsilon. हाँ, जिसके corresponding कोई भी finite epsilon net नहीं होगा. नहीं, ठीक है, तो हम बेसिकली हम वही उसी को आप यहाँ उसी एप्सिलॉन को हम टारगेट करेंगे. मेरे ख्याल से आप ये पहले काट दीजिए यहाँ, तो ऐसे लिखिए, suppose xd is not totally bounded, if possible suppose xd is not totally bounded, stop, then ये बेहतर होगा, कनेक्ट मतलब इसी के साथ है ना, एसोसिएटेड है. then we can find epsilon greater than 0 such that xd has no epsilon net. ठीक, तो एक एप्सिलॉन होगा जिसके करस्पॉन्डिंग कोई भी एप्सिलॉन नेट नहीं होगी इस xd की. दिस एप्सिलॉन इज दिस एप्सिलॉन. ठीक है, अब आप वो जो मैं कर रहा था वहाँ वो आप करिए, पिक x1 in x. This is permissible because capital X is non-empty. Observe that. Observe that जो x है it's not equal s epsilon x1. या आप observe that की जगह लिख सकते हैं then. या चलिए ये भी ठीक है, observe that x is not. बताइए कैसे है, how this x is not equal to this. बिकॉज अगर यहाँ इक्वालिटी होगी, अगर ये नहीं है तो फिर क्या होगा,
तो फिर देयर विल बी इक्वालिटी, मीन्स ये है। तो अगर इक्वालिटी है, इट मीन्स व्हाट? इट मीन्स सिंगलटन x1 is an epsilon net इज एन for एप्सिलॉन it. नेट, बट आप कह रहे हैं कि देयर इज नो एप्सिलॉन नेट, तो ये नहीं हो सकता, ठीक। So this is not equal to this. अगर ये इसके बराबर नहीं है तो means what then? Therefore, we can find x2 in x such that x2 does not belong to s epsilon x1। कर सकते हैं या नहीं? अगर ये बराबर नहीं है, ये फिर क्या होगा? चूंकि ये पेरेंट सेट है यहाँ पर और आप कह रहे हैं कि दे आर नॉट इक्वल, मीन्स इसमें एक एलिमेंट होगा जो इसमें नहीं है, वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। वी कैन फाइंड x2 in x that this x2 won't be in this, ठीक। इसके बाद अगेन सिंस, अब ये देखिए, अगर आप s एप्सिलॉन x1 लेते हैं, इसका यूनियन अगर आप लेते हैं s एप्सिलॉन x2, मैं आपसे कह रहा हूं दिस इज नॉट इक्वल टू x। क्यों नहीं है x के बराबर? बिकॉज अगर ये x के बराबर होगा तो फिर क्या होगा? दिस X1 यूनियन, x2 will be an epsilon. हाँ, अगर ये x के बराबर है, if s epsilon x1 union s epsilon x2 is equal to x, then the set x1 x2 Will be an epsilon is net. an epsilon net, बट आप कह रहे हैं कि देयर इज नो एप्सिलॉन नेट, सो ये बराबर नहीं हो सकता, सो दैट मींस दे मस्ट बी नॉट इक्वल। तो वही मैं यहाँ लिख रहा हूँ। अब दे आर नॉट इक्वल तो फिर क्या होगा? वी कैन फाइंड एक पॉइंट होगा यहाँ पर जो इस यूनियन में नहीं होगा। In वी कैन x. फाइंड x3, हाँ x3, x2 आ गया था इससे पहले, x1 की सिलेक्शन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, हाँ उसके बाद जो x2 x3 आएंगे वो इस तरह से आएंगे। वी कैन फाइंड x3 in x such that x3 it does not belong to the union s epsilon x1 union s epsilon x2, full stop। Now if I continue in this way, तो क्या मिलेगा आपको ऐसा करने से? Sequence xn. Continuing in this way, indefinitely, जो कि आप कर सकते हैं, बिकॉज आप मान रहे हैं ना कि दैट देयर इज नो एप्सिलॉन नेट, तो एट एवरी टाइम you'll get a new point, जैसे x2 फिर x3, अब आपको मिलेगा x4 उसके बाद x5, और इसमें कोई एंड नहीं होगा इस प्रोसेस में। और मैं आपसे वही कह रहा हूँ, कंटिन्यू दिस indefinitely, continuing in this way indefinitely, we get a sequence xn and running from 1 to infinity, wherein इस सीक्वेंस में एक चीज होगी, वो मुझे आप बताइए क्या है? wherein देखिए आप यहाँ कह रहे हैं कि x2 is not here, so that means distance between x2 and x1, what will be this? Greater than epsilon. Greater or equal to epsilon। इसी तरह से आप देख रहे हैं यहाँ x3 is not in the union,
So distance between x3 and x1 or x3 and x2 will be what? Because x3 is not in the union, so that means distance between x3 and xi, where I varies over 1 to 2. This will be what? This will be, चूंकि ये यूनियन में नहीं है तो मीन्स ना इसमें होगा ना इसमें होगा, so this will be greater or equal epsilon. So in general क्या आप प्रपोज करते हैं यहाँ से? Distance between इसमें ये होता है x distance between xn and and xm. xm. This will be greater or equal to epsilon. This will be true for all n's, m's in set of natural numbers with n not equal to n. बेसिकली मैं आपसे कह रहा हूँ इस सीक्वेंस में जो डिफरेंट टर्म्स है दे आर एटलीस्ट एप्सिलॉन अपार्ट. Full stop. And consequently xn n running from 1 to infinity cannot have any convergent subsequence in xt. ये मुझे बताइए कैसे? कम से कम इस एप्सिलॉन के करस्पॉन्डिंग ये कन्वर्ज करनी चाहिए. तो यहाँ नहीं, पे आपने डिस्टेंस ऐसे कहना चाहिए, अगर इमेजिन करिए इट हैज अ कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस, तो वो जो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस है उसकी टर्म्स क्या करेंगे? फिर कहीं एक्यूमुलेट करेंगी, ठीक है ना? तो मीन उस कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस की जो टर्म्स है वो क्लोज होंगी, बेसिकली वो कोशी सीक्वेंस होगी. बट यहाँ आप कह रहे हैं कि दैट डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स ऑफ द सीक्वेंस इज ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन. क्योंकि सब सीक्वेंस टर्म्स भी होंगी ना, सीक्वेंस टर्म्स. अगर आप कोई टर्म ले दें सब सीक्वेंस की, वो पेरेंट सीक्वेंस की टर्म भी होगी. पेरेंट सीक्वेंस में यह है कि डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इज ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन. तो यही चीज वहां सब सीक्वेंस में भी रिफ्लेक्ट होगी. डिस्टेंस बिटवीन एनी टू टर्म्स इन द सब सीक्वेंस इट विल बी ग्रेटर और इक्वल टू एप्सिलॉन. मीन्स वो सब सीक्वेंस कोशी नहीं हो सकती. कोशी नहीं हो सकती मीन्स वो कन्वर्जेंट नहीं हो सकती. बस कोशी होना कन्वर्जेंस के लिए नेसेसरी है. तो इट हैज नो कन्वर्जेंट सबसीक्वेंस. बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन. क्यों है कंट्रडिक्शन? बिकॉज हमारी जो सीक्वेंस है इट इज सॉरी हमारी जो स्पेस है इट इज सीक्वेंशियली कंपेक्ट. इसी के साथ लिखिएगा कॉमा करके, कॉमा विच contradicts the sequential compactness of metric space xt. So assuming that xd is not totally bounded, it leads to a contradiction. हमने ये किया था, हमने ये किया था यहाँ पर, if possible xd is not totally bounded, और आप देख रहे हैं कि this leads to a contradiction. It leads to the sequential compactness itself. So that means sequential compactness must imply totally boundedness. Hence, xd must be totally bounded. तो ये भी अब आप जिंदगी भर के लिए याद रखेंगे कि that every sequentially compact metric space is totally bounded.
ठीक है। या अब बस एक लास्ट थियरम है, वो हम रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसका प्रूफ भी आसान है, बस जो भी चीज़ें हमारे को चाहिए थी वो हमने सारी असल में ना इस्टेब्लिश कर ली है। थियरम ये वही है, रिवर्स इम्प्लीकेशन, जो हमारा मेन टारगेट था। कंपैक्टनेस इम्प्लाइज सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस, ये ऑलरेडी हमने देखा है। अब मैं आपको दिखाऊंगा कि कन्वर्स इज आल्सो ट्रू, दैट मींस सीक्वेंशियल कंपैक्टनेस आल्सो इम्प्लाइज कंपैक्टनेस। ये आप देखेंगे, एवरी sequentially compact metric space is a compact space. Proof. हमें दिखाना है कि every sequentially compact is compact. हम एक sequentially compact space लेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा कि वो compact भी होगी. Let XD be a sequentially compact space. A sequentially compact space and fancy F equal O sub alpha, where alpha varies over capital lambda, be an open cover of X in XD. Extra. ठीक। Now अब यहाँ क्या करेंगे, अब हम इस्तेमाल करेंगे Lebesgue covering lemma का। Lebesgue covering lemma जो है ना, it tells us that every open cover in a sequentially compact space has a Lebesgue number. हम इसका इस्तेमाल करेंगे। By the Lebesgue covering lemma, Lebesgue covering lemma tells us every cover in a sequentially compact space has a Lebesgue number. तो अगर हर एक कवर का Lebesgue नंबर होता है तो फिर इस फैंसी F का भी Lebesgue नंबर होगा, बिकॉज ये भी एक कवर है X का। This fancy F has a Lebesgue number. Full stop. Let epsilon greater than 0 be a Lebesgue number. एक Lebesgue नंबर होगा इसका, तो मैं ये लिख सकता हूँ। एग्जिस्टेंस ऑलरेडी हमने इंश्योर करी है ना इस Lebesgue नंबर की, so I can make use of that Lebesgue number. और मैं उसको यहाँ एप्सिलॉन मार रहा हूँ। Let epsilon greater than 0 be a Lebesgue number for this cover fancy F. ठीक है। Also, since अभी हमने देखा every sequentially compact space is totally bounded. Also, since every sequentially compact space is totally bounded, it follows totally bounded होने का मतलब क्या होता है,
कि for each epsilon there is an epsilon net. So in particular अगर ये होगा for each epsilon, so it will be true for epsilon by 2 also. हम क्या करेंगे, हम ये epsilon लेंगे, इसी का half लेंगे, that will be a positive quantity, और उस positive quantity के corresponding भी एक epsilon net होगी, because totally boundedness की definition है कि for each positive quantity there is an epsilon, for each epsilon positive there is an epsilon net. ठीक है, तो मैं वही यहाँ लिखूंगा. It follows we can find an epsilon by 2 net A, and let's suppose A is equal A1, A2, so on up to A key of X and XT. हम इस एप्सिलॉन का इस्तेमाल कर रहे हैं जो हमारा लेबेग नंबर है. ठीक, देन अब आप कह रहे हैं कि दिस इज एप्सिलॉन बाय 2 नेट ऑफ x and xt, तो फिर क्या होगा, देन x विल बी व्हाट, किसके बराबर होगा ये, union it will be union I runs from 1 to k open is sphere epsilon by 2 epsilon by AI. 2. या इसको आप रखेंगे, कोई नाम दीजिए, लेट्स कॉल इट स्टार. ठीक, सेंस. अब ये देखिए, आप अगर आप डायमीटर लेंगे ऑफ एस एप्सिलॉन बाय 2 AI, आप मेरे ख्याल से यहाँ एप्सिलॉन बाय 4 करिएगा, सुना शायद हो तो नंबर लेबेग नंबर की जो डेफिनेशन है हमने वहाँ स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी लिया है, या हाँ हमने वहाँ शायद स्ट्रिक्ट लिया होगा इनइक्वालिटी को. ये कंपनसेट करने के लिए कोई इश्यू नहीं है, बट एक मिनट, लेट मी चेक इट फर्स्ट. हाँ हमने स्ट्रिक्ट लिया है, तो वहाँ आप एप्सिलॉन बाय 2 की जगह लीजिएगा एप्सिलॉन बाय 4 नेट. जिस लॉजिक के बिना पर एप्सिलॉन बाय 2 नेट होगी, उसी लॉजिक के बिना पर एप्सिलॉन बाय 4 नेट भी होगी. यहाँ आप थोड़ी सी स्लाइड ना इसमें एडजस्ट, एप्सिलॉन बाय 3 भी आप कर सकते हैं. अच्छा, लेट्स टेक एप्सिलॉन बाय 3. 2 को 3 बनाना आसान है, ये आप करें. ठीक है, तो यहाँ भी फिर ये होगा एप्सिलॉन बाय 3. अब इसका डायमीटर क्या होगा, diameter of the open sphere with center AI and radius epsilon by 3. This cannot exceed 2 times the radius. The radius is epsilon by 3, so it cannot exceed 2 epsilon by 3. Now 2 epsilon by 3 is less than epsilon. And what is epsilon? Epsilon is Lebesgue number for fancy. तो फिर क्या होगा, this is true for each I equal to 1 to k. This diameter is less than epsilon for I equal to 1 to so up to k, comma, it follows There will be a fancy of numbers. it will be exactly, it follows for each I in the set 1 to so on up to k, we can find हर एक ओपन स्फीयर, ये ओपन स्फीयर के करस्पॉन्डिंग एक, बिकॉज दे आर गुड सेट्स, बिकॉज इनका जो डायमीटर है इट इज लेस देन लेबेग नंबर, सो वी कैन फाइंड
अब इसके करस्पॉन्डिंग जो फैंसी एफ मेंबर हम अस्यूम करेंगे, हम मानेंगे इट इज ओ सब अल्फा सब आई। ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे कि किस तरह की नोटेशंस यहाँ इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। सो वी कैन फाइंड ओ सब अल्फा सब आई such that S epsilon by 3 AI AI is contained is contained in O sub alpha O I. sub alpha sub I, and this will be true for बेसिकली वो तो For मैं वहां लिख रहा हूँ फॉर ईच आई, तो उसको फिर से दोबारा लिखने की जरूरत नहीं। ठीक, अब आप क्या करें, यू सिंपली यूज दिस इन स्टार, यूजिंग दिस इन स्टार, स्टार में इसका इस्तेमाल करिए तो देखिए क्या मिलेगा। वी गेट, ये है स्टार, स्टार में आपने इसका इस्तेमाल करना है, तो मुझे बताइए क्या मिलेगा आपको। X is equal to union of O sub alpha I. एग्जैक्टली आपको मिलेगा x इज इक्वल यूनियन I runs from 1 to k O sub alpha sub r, full stop. Hence O sub alpha sub I runs from 1 to k is what then? Finite Is a subcar. finite subgroup of x in the cover fancy. Full stop. Consequently, यही तो चाहिए था ना compactness के लिए. Consequently, xt, x is compact means xt is a compact space. xt is a compact space. So that means sequential compactness implies compactness. इसकी वो पहली वाली implication already हो गई थी, compactness implies sequential compactness. अब ये जब आप उसके साथ ऐड करेंगे ये information, तो आप देखेंगे कि that they are actually equivalent. So in the case of metric spaces, sequential compactness, they are same. ठीक है ना? हमने कनेक्टेडनेस में वो इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम देखी थी। Yes sir. मैंने आपके साथ वो डिस्कस किया था। कनेक्टेडनेस मैंने आपके साथ, मैं आपको एक सेल बस एक दफा दिखा रहा हूँ, आपको देखिए। पहले मैं स्ट्रीमिंग रोक रहा हूँ।